Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 4, Center State Financial Relationship of Financial Administration. Topic to be covered are Introduction, Federalism, Basic Feature of Federalism, Principle of Fiscal Federalism, Evolution of Financial Federalism in India. सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है बेसिकली फेडरलिज्म होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है। बेसिकली फेडरलिज्म क्या है, जिसके थ्रू हम लोगों ने पॉलिटिकल जो पावर होती है एक पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री की डिस्टिंग्विश की है, डेट इज नोन एज फेडरलिज्म। सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। हम इस स्लाइड पे मूव करते हैं। सो द क्लासिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म वॉज and with two parallel governments of coordinate operating in watertight compartments in nowhere a functional reality now. Federalism is not a static parameter. Federalism has become to understood a dynamic process of cooperation and shared action between two and more level of governments with increasing independence. देखिए फेडरलिज्म क्या है, जिसमें हम लोगों ने अपनी पर्टिकुलर स्टेट एंड पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको अलग अलग पावर दी, जिनसे उनकी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा हो गया और जो उनकी इंडिपेंडेंस थी वो इंक्रीज हो गई है और जो उनका बेसिकली डेवलपमेंट थी वो राइज अप होने लगी है। सो द फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ड्यू ऑफ दीज चेंजेस कॉन्सेप्ट एंड फंक्शनल realities, avoiding a dogmatic approach. They fashioned a supragenic system of two-tier polity in which the predominated strength of unions is blended with the essence of cooperation federalism. So the primary lesson of Indian history is that this vast country only that policies of system can endure and protect its unity, integrity and sovereignty against extreme aggregation and intent interrupt, which ensure a strong center with paramount power. Now similar is written in this particular slide. Now move to our next slide. Federalism or meaning. So all political system has people with differing and another conflict demand and different ability to achieve them. Various group of people in such system have however common and shared concern. As we have already discussed, देखिए कुछ सेंट्रल होता है, कुछ स्टेट में होता है, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो सेम कंसर्न के ऊपर काम करते हैं। लाइक हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा हमारे स्टेट में भी होता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। सो सम people are working on the same concern. So on the other hand, these group of people have separate identities and would like to retain their internal autonomy. On the other hand, their deeper socio-economic and culture invest get agricultured through a participative political process and this function of government is a mediator between different interest groups within a legal organizational framework which bind them together. So similar is written in this particular slide. अब देखिए जो अलग अलग बेसिकली हमारे फाइनेंशियल थे उन्होंने अलग अलग रिपोर्ट दी, अलग अलग डेफिनेशन दी। Here are the some of famous definition. So the view emphasizing independence of two level of government is not generally accepted. It is pointed out that
the tremendous growth of concurrent power in a feudal form of government during the present century, and the overlapping of government function is so great that to suggest that two levels of government are in fact restricted to separate spheres is quite unrealistic. Now move to our next slide. Next slide contain basic feature of फेडरलिज्म. सो सबसे पहला है हमारे पास इंडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन. देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था फेडरलिज्म क्या था, जिसमें हमारे पास हमने स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज अलग अलग पावर एंड पॉलिसीज बना दी. तो उन दोनों पीपल से उस पर्टिकुलर जो पीपल है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सेकंड, उनसे क्या हुआ, उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो गई. सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. Conventional definition of federalism usually emphasizes on the fact that between the two levels of government there is a division of power such that the central government is given specified function and the state enjoys the residual powers. The outstanding example of such a federalism is USA, already noted growth of concurrent and overlapping function is as between the two level of government has led to the emergence of coordinative and cooperative federalism. The very wide use of grants in aid and another discretionary transfer had led to shift away from independence. Some writer has gone to the another extreme of suggesting the federalism has been reducing to a myth. देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि हाँ जो फेडरलिज्म के अंदर इंडिपेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसका सबसे अच्छा एग्जांपल यूएसए के बीच में है. यूएसए फेडरलिज्म को फॉलो करता है. बाय फॉलोइंग दिस फेडरलिज्म तो वहाँ की जो एज वी कैन सी कि जो वहाँ की ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली बहुत हाई है एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज उनके जो रूल एंड रेगुलेशन है स्टेट वाइज अलग हैं और सेंट्रल वाइज अलग होंगे. सो फेडरलिज्म प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन इज गाइडेड बाय द ड्यूअल consideration of self-interest of unit as also mutually commutative of larger objective which bind the federating unit together. Thus the two-way process of guarding self-interest and yet reaching out beyond it for the realistic of common appreciation was maybe rooted in culture, reason, race, language, internal or external and shared history. Similar is written in this particular slide. Now move to our next slide. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेसिकली इसके बेसिस फीचर्स की बात की गई है. सो पहले हम लोग पढ़ते हैं रैशनेल ऑफ कमिंग टुगेदर. सो देयर इज एन इनहेरिटेंस urge among the federating unit to become together in federation so that the political and material interest of unit can be better safeguarded through the national that is brought into existence. So there are the 2 point. Basically इसमें 2 point है. एक सबसे पहला point है federation by disaggregation, that is by the process of decentralization of previously existing state of unitary character breaks up from a federal state. सबसे पहला एक सेंट्रल को हम लोगों ने फेडरल स्टेट के अंदर ब्रेकअप कर दिया. सेकंड पॉइंट है फेडरेशन बाय एग्रीगेशन. अब फ्रीडम बाय एग्रीगेशन है. So that is by the process of centralization a number of previously independent units agree to come together to form a federal state in which they continue to maintain their individuals. In most cases federating have become brought around through a aggregation principle.
देखिए पहला क्या था, हम लोगों ने, हमारे पास खूब सारे स्टेट्स हैं, हमने ज्वाइन करके फेडरेशन फॉलो कर लिया, और हमारे पास हमने क्या किया, एक बहुत लार्ज स्टेट है तो हम लोगों ने उसको ब्रेकअप करके फेडरेशन को फॉलो कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज अवर इकोनॉमिक determinants. So, decentralization of power and resources through federalism is regarded as better solution to achieve economic takeoff, optimal resources use, removal of regional economic disparities, and strengthening of bearing power in global market. In developing countries, it is possible to enhance allocation of resources on health, education, poverty, and social services. Now move to our next slide. Next slide contain principle of fiscal federation. So कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है independence and responsibilities. So the central facet of federalism is the division of power and function between the federal government and state governments. देखिए बेसिकली सबसे पहला क्या था, हम लोगों ने जो पावर थी वो अब अलग अलग कर दी है, जिनसे हमारे पास जो स्टेट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. सो डिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड obligation has between two level of government should correspond to division of power and function. Next point is advocacy and elasticity. So financial independence also implies the central and unit governments should have advocate financial power to perform their exclusive function. देखिए अब उनके पास भी एडवोकेट पावर होनी चाहिए, उचित मात्रा में उनके पास भी पावर होनी चाहिए ताकि वो अपनी जो फंक्शनिंग है उसको इजीली चला सकें. सेकेंड है एफिशिएंसी. सो द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन शुड confirm the requirement of efficiency and economy. No matter how well intentioned a schema may be or how completely it may harmonize with the abstract principle of justice. If the text does not work administratively, it is doomed to failure. Next is equity. Fiscal federation is viewed within the framework of welfare economics. Equitable distribution of wealth and income in the economy are the proper concern of welfare state. Next है equalization transfer. It does not usually happen that revenues appropriate to feudal and state exploitation yield exactly the same of money required for performing their respective function. So, in most of federation, elastic sources of revenue are in hand of फेडरल गवर्नमेंट विच हैज सरप्लस रिसोर्सेज. जैसे हमारी इंडियन कंट्री में होता है, सपोज कीजिए एक स्टेट सेम रिसोर्सेज को जनरेट नहीं कर पाई है कि वो कुछ फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सके, उसके पास में भी इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे फिकल गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली फेडरेशन को फॉलो करती है और उन्हें प्रॉपर जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करवाती है. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड कंटेन इवोल्यूशन ऑफ fiscal federalism in India. So they are the sum of the point. First point is growth of fiscal federalism. So highly centralized financial system come into being in India with take over the administration by the British Crown from East India Company in 1858. The Governor General in Council retained complete control over professional resources as well as expenditure. So the Government Act according to 1938, it divided the revenue sources into three categories: exclusive, federal, taxes laid by the federal government by shared with provinces or assigned to them, taxes
levied by the federal government. Now question for all of you people. At the very beginning, my first question is, what do you mean by term federalism? Second question is, enumerate the principle of fiscal federalism. Is federalism compatible with the autonomy of unit governments? So today we will wind up our session here. Next we are discussed in our next class. Till then, happy learning, free learning.